Good morning, students. This is a new lecture from LegalStix Law School, and we are running this course, Samvidhan, which is a comprehensive certificate course on Indian Constitution. And we've done a couple of sessions in it. We've done particularly 4 lectures and have completed things like the preamble, the history, the making of the Indian Constitution, the various features, and now from today, or maybe this lecture particularly deals with a very core concept or a very fundamental concept that lies at the very heart, or which is a very essential pillar in our democratic system. We will be starting with this concept of federalism in India, or what do you mean by the idea of what kind of governance system do we have, what kind of structure do we have. So if I have to begin with, okay, so before we go deeper or we delve into क्या उसके essentials हैं, exactly what is mentioned in the books, or how the various authors have provided for the meaning of federalism. So first thing, we can just we can try to state from the perspective कि when we are speaking of Indian federalism, it is a very essential pillar of the understanding, or the essential pillar of our democratic system. So federalism in India, generally you might have heard this word with a lot of prefix, or a lot of adjectives. You might have heard things like loose federal structure, quasi-federal structure, or maybe hybrid federal structure. So you need to understand this concept. You need to understand, what does it mean, so that you can understand the distribution of power. Okay, you can understand, और आपको ये समझ आ जाए कि जो power distribution है, power distribution between the central government and the states. Okay, so I can say कि understanding this topic of federalism becomes very important, to understand or to comprehend अच्छे से इस बात को समझने के लिए कि how have we distributed power between central government and the states, what is their relationship, and what is their relationship between the central and the state governments by this particular distribution of powers, and how it is impacting us, impacting the voters, or you can say the citizens of India. Now, before I delve deeper into case laws, from the perspectives of ideal constitutional class, from the perspective of an ideal constitutional class, तो इसका क्या essence है, इसका मतलब क्या है, ये क्या principle इसका exactly at core, what do you mean by this particular idea, what is the meaning of this term? तो इसका meaning बहुत simple सा है. Federalism as a concept, आप कह सकते हो, is a principle. क्या principle? जिसमें there is sharing of powers. There is sharing of power between authorities. Now, you can also try to relate it with your own daily lives. Okay, if in your home you decide, decide a thing कि ये काम आप करोगे, घर के काम this particular individual will do, or the other works this particular individual will do. बाहर से सामान ये लेकर आएगा, फिर इसको sort out ये करेगा. The budgeting this particular person will do. So it will help you to make your work easy. Okay, उसी context पे, उसी तरीके से the government is functioning. Okay, so the territories, the units, the states have their own government. Fine. So कुछ पावर जो है, पावर शेयरिंग की जो बात है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी
एंड द रीजनल एंटिटीज जैसे कि स्टेट्स हैं, उनके बीच में डिवाइड हो रखी है. देयर इज शेयरिंग ऑफ पावर. Okay, the principle is about sharing of power. In what context? With who all people? Sharing of power का मतलब होता है that you are sharing power between central governing bodies और दूसरा regional entities or states from the context of India. अब इसका purpose क्या है in Indian context? The role you can say is, if you share power between the units and the center, it will try to uphold your principles of unity, your diversity will be intact, and of course democracy will also be be upholded, or democracy will also survive in a better manner. So jab Indian constitution, I would say, when it was enforced, it established a federal structure with a strong center in India. Okay, तो उसने significant autonomy दे दी states को. जैसे for example, you have a position of the state executive, there is a position of governor. Okay, then in the state itself there is a position of, what do you say, the council of ministers, who is headed by a chief minister. So just similar grounds पे whatever is the structure at the central level, that is also on the in the state level. Okay, so when the constitution was made, the constitution itself provides for autonomy. So the concept of federalism is that although the central government has more powers, that is why we say it कि एक strong center है, but still there is significant authority or significant autonomy, freedom to the state governments or the units or the regional governments. तो अब इस चीज की एक झलक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिखाई देती है. You have 3 lists. Okay, so you have a union list, you have a state list, and you have a concurrent list. So union list में only the central government, the Union of India, can make laws on the subjects. On the state government list, only the states can make laws on the subjects. In the concurrent list सिर्फ दोनों जो लोग हैं वो बना सकते हैं. But इसके अंदर कुछ चीजें जो नहीं समझ आ रही है. The union is given more superiority, or I would rather say कि union has a more authority when it comes to creating laws, or when it comes to the sharing of powers. तो ऐसा एक system क्यों बनाना चाह रहे थे Constituent Assembly makers? Because they wanted to develop unity. They wanted to develop unity, in the diverse nations. India, we can say India को कहते हैं ना, India stands for unity in diversity. There are so many cultures that make up our nation. तो उसी तरीके से जो federalism है India में, it aims to rather promote, or it aims to give you एक ऐसा framework जो कि सारी regional aspirations, local interests, उनके क्या safeguards हैं, the concept of cooperation of these people, collaboration between center and states, वो सारी चीजें ताकि एक अच्छे तरीके से accept कर ली जाएं, accommodate कर ली जाएं. So it is through the concept of federalism that you are giving, I would rather say, a framework that is helping you to accommodate everybody's interests, everybody's aspirations. So when you are speaking of power sharing या division of powers, तो जो constitution है आपका वो कई जगहों पे center को ज़्यादा exclusive power देता है. Okay, when we are speaking of a strong center, so कुछ major portions, or the exclusively
vested power of central government would include certain more important things than which are given to the state. जैसे defense की बात है, the defense of the country, the foreign affairs, okay, the foreign affairs, creation of currency. So these things are always into the hands of the central government. States को अपने लिए उनके ऊपर क्या चीजें ज्यादा affect करती हैं, जैसे उनकी public health हो गई, their education, law and order, तो those areas are left for state. There are other aspects also which are mentioned in the state list, but to understand, you know, day to day life की जो बात है, those kind of things are, you know, given to the state governments. तो अब इस distribution से या इस you know separation से, तो ये allocation से what is actually happening? Okay, so the idea is same. When you distribute powers, it will bring balance. अगर आप घर में सारा काम मिल बांट के करोगे, तो there will be less of chaos. Okay, so that is the same idea when it comes to distribution of power between governments also. कि अगर आपने power distribute करा हुआ है states के बीच में, regional units के बीच में और एक major center government के बीच में, तो it will help you to balance. It will help you to balance your conflicts, or it will help you to balance the national unity rather. ठीक है, and जो भी states को जो immediate requirement है for the citizens, the units will be able to provide to their you know, will be able to provide to their citizens. अब ये क्यों है, मतलब why it was actually provided, if we go into the background of seeing it from the context of the Constitution of India. So we know कि जो Indian Constitution है, it is the longest written constitution, right? The Indian Constitution is the longest written constitution. और हमने बहुत सारी countries से different constitutions से अच्छे अच्छे बेस्ट फीचर्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लेने की कोशिश करी. सो वी ट्राई टू असेंबल द बेस्ट फीचर्स ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम्स, और अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ थी, ओके, तो उसको हमने अपने हिसाब से अडेप्ट किया. तो आई वुड रादर से कि द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हाइल बोरोइंग, ओके, we say na, in one of the classes we've said कि the Indian Constitution is a bag of borrowings. लेकिन जब ये चीजें borrow कर रहे थे और they were trying to apply it to themselves, तो उन्होंने borrowing के वक्त they tried to remove any kind of problems, okay, remove the vices, remove any kind of errors जो कि किसी system में थे. तो we can rather say कि the Constituent Assembly ended up taking a middle path. ठीक है, अब ड्राफ्टिंग कमिटी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी हेडेड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर, वो अपने आप में दे डिस्क्राइब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरल in structure, as federal, you know, as a federal in structure. The drafting committee provided Indian Constitution as federal in structure, but जब लोगों ने इसकी actual working देखी, when the scholars in the actual working of the Constitution you see कि ये ना तो बिल्कुल completely unitary है, it is not completely unitary, ना ही ये completely federal है. Okay, completely federal नहीं है. It has its own nature. It is, you know, it gives you, ऐसा नहीं है कि सारे essential features ये provide करवाता है. Okay, the supremacy is given to the constitution. ये एक federal structure का एक बहुत important part है. अब Indian Constitution ये एक federal structure का ये important part Indian Constitution को देता है, that the constitution is supreme. ठीक है, और जो state है या फिर जो organs है, उनको अपनी powers constitution से ही मिल रही है, be it the legislative power, be it the executive power, judicial power. और जो concept of dual government है, वो भी constitution ही provide करवा रहा है कि there will be a central government and there will be a state government.
और दूसरी चीज, आखिरी चीज, व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स, मतलब रियल फेडरेशन के रियल फीचर्स ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ अ फेडरल स्ट्रक्चर? कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. ओके, द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट gets its existence, or state gets its existence or power from constitution only. State gets existence from constitution only. उसके बाद आप कह सकते हो सारे organs legislature, executive, judiciary organs get power from constitution only. And then the system of dual government, कि dual government होगी, power sharing होगा, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. ठीक है, बट व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑफ व्हाट काइंड ऑफ शेयरिंग इज देयर, ठीक है, when you see ki what kind of sharing is there, we still try to say ki the Indian constitution has a strong center. मतलब exact distribution नहीं है. Still the Indian structure or Indian federation जो है, it provides for creation of a strong centralizing tendencies. ठीक है, तो when the Indian constitution provided for a federal system of government with strong centralizing tendencies, तो इसका जो setup है, ये कहाँ पे हिस्ट्री में इस तरह के स्ट्रक्चर को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं? इट वाज लेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, तो जो हमारा फेडरल सेटअप करंटली है, द फाउंडेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ फेडरल सेटअप वाज you can see it in the Government of India Act. It was laid through the Government of India Act of 1935, the Indian federal setup. Ab, like I said, when you are speaking of any characteristics, so our federal setup laid down in the Government of India Act 1935. ठीक है, तो किसी भी फेडरल स्ट्रक्चर के, जैसे हमने अभी वो 3-4 एलिमेंट्स करे, सो व्हेन यू आर स्पीकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई देयर विल बी अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा. ठीक है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन विल बी सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होगा. मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट अथॉरिटी इज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. देन जो मैंने बोला ड्यूअल पावर है, मतलब डिवीजन ऑफ पावर होगी. डिवीजन ऑफ पावर इसमें सेंटर एंड रीजनल गवर्नमेंट्स के अंदर डिवीजन ऑफ पावर्स होगी. एंड समटाइम्स द कॉन्स्टिट्यूशन इज, or I would rather say, when we are speaking of from the angles of political theory, जो ये written constitution होगा, जो ये supreme constitution होगा, वो rigid होगा, a rigid constitution. ठीक है, and last one we can say एक independent judiciary का structure बनाया जाएगा. It will provide for independent judiciary. But you see, our constitution is not very rigid also. Okay, although we have the concept of distribution of powers between center and states, it provides for an independent judiciary. Rather, independence of judiciary is also a basic structure. तो फेडरलिज्म क्यों आपको रिक्वायर्ड है कि भाई जो यूनिट गवर्नमेंट है, जो स्टेट की गवर्नमेंट है, वो बच सके कि भाई सेंटर गवर्नमेंट सुप्रीम ना हो जाए, सेंटर गवर्नमेंट tyrannical ना हो जाए. ओके, वो तानाशाह ना बन जाए. सो दैट इज द आइडिया. सो फेडरलिज्म, पावर डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मेथड टू protect the state governments against a central tyranny, a central dictatorship, or a majority rule of the center. तो उस केस में उन्होंने फेडरलिज्म के लिए भी कुछ यूनिक फीचर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कर दिए.
So I would rather say कि you require federal structure, you require federalism to not only balance your conflicts or to or to agree or to fulfill the aspirations of everybody, but you also need it for protecting the locals or to protect the unit governments against tyranny of central government, against the the dictatorship tendencies or me factor or I am supreme tendencies of the central government. तो इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उन्होंने फेडरलिज्म के भी यूनिक फीचर्स प्रोवाइड करे. अब हमारे यूनिक फीचर्स फेडरलिज्म में क्या है कि वी हैव अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज पावर डिस्ट्रीब्यूशन, बट फिर भी ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, our constitution acquires a unitary character. During the times of emergency, our constitution acquires a unitary character. Or even during the normal times, ठीक है, even during the normal times, जो union government है, it has control or the control to direct the exercise of power by state governments कुछ purposes के लिए. ठीक है, तो ये जो फीचर्स है कि मोर पावर और मोर कंट्रोल विद द यूनियन गवर्नमेंट, ये प्रॉपर सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म को या किसी भी फेडरल कैरेक्टर को कॉन्स्टिट्यूशन के किसी तरीके से डाइल्यूट कर देती है. ओके, and that is why we say कि Indian constitution has strong centralizing tendencies. Okay, so you can note down a case here. The case is Kuldeep Nair. Kuldeep Nair versus Union of India. Kuldeep Nair versus Union of India, 2006. So in this particular case, the Supreme Court has also accepted by saying कि कुछ times में ये emergency में acquiring central unitary character की बात about the Indian Constitution or the Federal Constitution, ये चीज कुलदीप नायर के केस में Supreme Court ने भी मानी है. तो इस तरह की चीजें कि भाई डायरेक्ट कर सकते हो आप स्टेट गवर्नमेंट्स को, और यू कैन कंट्रोल द स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर सर्टेन पर्पसेस. फॉर एग्जांपल यू सी आर्टिकल 256, आर्टिकल 257, 49, 250, तो उनके अंदर दीज ऑल एग्जांपल्स बाय देमसेल्व्स ट्राई टू प्रोवाइड कि भाई हमारा जो फेडरलिज्म है, हमारा जो स्ट्रक्चर है, एंड that is has a characteristic कि भाई ये एक strong center की बात करता है. It provides you for a strong center. अब Indian federalism को अगर हम दोबारा बात करें इसकी, तो जो इंडियन फेडरलिज्म है, it is not territory related also. ठीक है, it is not territory related also. मतलब आप स्टेट्स को बहुत ज्यादा रिकॉग्निशन दे रहे हो, बट सी इट इज नॉट नेसेसरी कि राज्यसभा में जो जिस स्टेट से इलेक्ट हुआ है वो वहीं का रेजिडेंट हो. इट इज नॉट नेसेसरी. somebody from Maharashtra may get elected on a Rajya Sabha seat of Haryana. It is quite possible. It is not necessary. तो Indian federalism territory related भी नहीं है. It will not cease to be a federal structure just because a person who has become a Rajya Sabha member, he did not belong to the state जहाँ से वो elect हुआ, जहाँ से वो elect होके राज्य सभा की सीट पे जाके बैठा है. These things again and again have been accepted by the Supreme Court, and Kuldeep Nair's case is a prime important case when it comes to understanding the Indian Constitution and its federal structure. तो when we are speaking of कि और क्या क्या हो सकता है, या we say कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है,
nature of the federal structure in Indian constitution, we generally say it is a loose federal structure. It is loosely federal structure. Loosely federal मतलब कि भाई डिविजन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर है, ओके, और दोनों में से कोई एक दूसरे को डिक्टेट नहीं करेगा. That is the idea. But still, they are not strictly divided. The division is not strictly divided. The center has more power. Okay. And उसके अलावा जो आपकी units हैं, they cannot go away. They cannot just leave the union and get back as अपने आप के लिए अकेले वो जा नहीं सकती. They cannot leave away. They have not come, or they have not accepted the supremacy of the union as an agreement. Okay, they cannot leave the supremacy of the union, और वो उधर से हटके वो उधर से secede नहीं हो सकती है, वो उसको separate उससे नहीं हो सकती है. तो कुछ लोगों ने, when we are speaking of the Indian federalism, some people have also called it as quasi federal or hybrid federal. Okay, क्योंकि this thing, the distribution is such कि हमेशा ही जो responsibilities या फिर जो control है वो central government के पास strong enough है, not only to take care of its own responsibilities, but the central government can also guide, it can control, it can coordinate among the units or the activities of the units. तो फिर इस वजह से हम ये जनरली बोलते हैं कि the Indian Constitution is a federation with strong center. And many times back to back these things are have been told by the Supreme Court judgments. The courts have agreed about such a kind of a character. Now, when you are speaking कि भाई हम इसमें Government of India Act की भी बात कर रहे थे, तो when we try to understand the historical past, तो फाउंडेशन की जब हम बात करते हैं कि भाई इंडियन फेडरल सिस्टम की फाउंडेशन की हम जो बात करते हैं, so it lies in the history. It is in the history of the Indian territory that we can find the roots of federalism in India. It is not a new concept. ऐसा नहीं है कि सीधा सबसे पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन में ही इसकी बात करी गई थी. It is not. Okay, so see, India के अंदर क्यों ऐसी चीजों की रिक्वायरमेंट थी? That is what I'm trying to answer here. See, we are a vast country, ठीक है, जैसे यूरोप है, ठीक है. अब हम ज्योग्राफिकली भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, ओके, कल्चरली भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है. तो अगर हमारे को कोई भी सेम कल्चर नहीं होगा, okay, there might be some kind of problems, there might be some kind of conflict कि भाई there is an absence of similar cultural backgrounds. Okay, तो उस वजह से in order to bring everybody under one umbrella, okay, everybody की तुम आके एक यूनियन की, sovereign union of India की आप ये बात को accept करो, so it becomes difficult to bring everybody together. तो भाई आप कह सकते हो कि आपको जब सब लोगों को एक साथ लेके आना हो, जिनका बैकग्राउंड डिफरेंट है, जिनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट है, जिनकी लैंग्वेज डिफरेंट है, रिलीजन डिफरेंट है, सब लोग बहुत दूर दूर हैं, ज्योग्राफिकली भी बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, तो इट इज नेसेसरी. सो आई वुड रादर से इट वाज आउट ऑफ नेसेसिटी in order to accommodate everybody's requirement of culture, of language की, and to इसी वजह से accommodate करने के लिए सबको आपको कुछ ना कुछ provide करना पड़ेगा. Some flexibility you will have to provide to these people. You will have to give them some kind of power, some kind of flexibility. So in order to accommodate their
homogeneity, or I would rather say to make them somehow homogeneous, to accommodate their heterogeneity, उस वजह से आपको लोगों के साथ थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा. और इट इज आउट ऑफ दिस नेसेसिटी कि द फेडरल structure, the concept of distribution of power, the concept of distribution of power was born. Okay, so the reasons for originating a concept of federal system in India was out of necessity. ठीक है कि भाई you need to be flexible enough so that you can regulate the relationships between central sovereign and the local chiefs जो अलग-अलग different जगह पे है. और if the political and administrative integration is concerned, तो वो आपको तभी होगी जब आप हर चीज की बात सुनोगे, हर किसी की बात सुनोगे. लेकिन when you are speaking of centralization, अगर आप centralization कर दोगे तो it is against everybody. It is against everybody's identity. So when you are looking at the vastness of your country, when you are looking at the population that you have, कि हर स्टेट में इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, यू आर लुकिंग एट डिफरेंट लैंग्वेजेस, कल्चर, सोशल इकोनॉमिक सिस्टम्स भी डिफरेंट है, तो उस जगह पे एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन इम्पॉसिबल हो जाता है. सो when you are speaking of developments of constitution, कि भाई ये शुरुआत से ही from not only 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, बल्कि 1919 का भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, I would rather say the concept of diarchy, a concept of diarchy was added up. ठीक है, in the government of India act of 1919. तो उस टाइम जो इंडियन नेशनलिज्म था, ठीक है, the Indian nationalism or the prevalence of British Muslim communities भी थी, सबके अलग-अलग vested interests थे, सबके अलग-अलग vested interests थे. तो उस केस में in order to give safeguards to the minorities, तो उन सबको देखते हुए, दयार्ची को देखते हुए, उसके ड्रॉबैक्स को देखते हुए, it was decided or it was proposed कि भाई इंडिया should have federation. India should be a federation rather than I would rather say a central or a centralized administration. India should have a federation. तो Government of India Act में finally 1935 में इस proposal को accept किया गया and a federation with strong center was finally decided for India. अब what kind of federation, or what kind of federation, why do we call it federation with strong center? ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे कॉन्सेप्ट को, इंडिया एज अ फेडरल कंट्री को क्रिटिसाइज करते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के कैरेक्टर्स बता के, जो कैरेक्टर्स ये दिखाते हैं कि भाई इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज. द फेडरेशन ऑफ इंडिया और द फेडरलिज्म इन इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसीज. सो व्हाट आर द ग्राउंड्स, व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच आर क्रिटिसाइज्ड on the fact कि भाई exactly this is not a federal structure. Exactly, this only provides for a strong central government. Okay, so why are we actually calling it a federation? A federation with strong center. Why do we call it? तो आप इसके कुछ characteristics देखो कि भाई it is only the union parliament. सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट के पास ही आर्टिकल 3 में स्टेट के नाम बदलने का, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज को ऑल्टर करने का राइट है. ओके, सिर्फ यूनियन पार्लियामेंट के पास उसका राइट है. हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप है.
Okay, we have the concept of single citizenship. आर्टिकल 9 को देख लीजिए. जो गवर्नर है स्टेट में बैठा हुआ, जो स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड भी है, उसको जनरली एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट माना गया है. गवर्नर एज एन एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट और द एजेंट ऑफ रादर सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके, ऐसा माना गया है. अब जो डिस्क्रिशन है कि भाई गवर्नर के पास कौन सी डिस्क्रिशन है कि भाई अगर वो कोई भी, हम सेंट्रल की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि हमने सेंटर को पूरी पावर दे दी, तो इसको क्रिटिसाइज किया गया है. अब हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कैसे इट इज अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल टेंडेंसीज है हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में. अब जो भी डिस्क्रिशन है गवर्नर, डिस्क्रिशन ऑफ गवर्नर, वो उसकी पर्सनल डिस्क्रिशन तो नहीं है, वो उसकी पर्सनल सेटिस्फैक्शन नहीं है. और जो भी जिस भी बिल को वो असेंट करेगा, ही कैन नॉट बार बार उसको वापस नहीं भेज सकता. वो मनी बिल्स को तो वो वापस भेज ही नहीं सकता. ठीक है, तो उसकी जो डिस्क्रिशन है वो अपनी पर्सनल सेटिस्फैक्शन से डिस्क्रिशन को यूज नहीं कर रहा. ही इज टेकिंग द एडवाइस, एड एंड एडवाइस. Okay, he's taking the aid and advice of the council of ministers. और advice का मतलब ये नहीं है कि सुना और अनसुना कर दिया. They are also aiding him. Aiding का मतलब है एक तरीके से they are influencing his decision and to a larger extent. ठीक है. अब दूसरी चीज कि भाई पार्लियामेंट जो है, कुछ सब्जेक्ट्स जो स्टेट लिस्ट में मेंशन है, आपने बोल दिया शेड्यूल 7 में आपने 3 लिस्ट्स बनाई. ठीक है, यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बनाएगी. बट कुछ सब्जेक्ट्स जो कि स्टेट लिस्ट में मेंशन है, ओके, उनके ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकती है. एंड आर्टिकल्स लाइक 249, 250, 253, okay, power of parliament to make laws on subjects of state list as per the articles 249, 256, 253. तो भाई ये सारी चीजें हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर और अ फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का जो बात है वो उसकी तरफ इशारा करता है. देन अनदर वन कि भाई जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं आपके, जो भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं, whatever administrative relations, किसमें जो आपके 256 आर्टिकल 256 से लेके 263 तक गए हुए, those administrative relations provide कि भाई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, the central government can control, it can control the functioning, it can control the functioning of the government in states, the functioning of government, control the functioning of गवर्नमेंट इन स्टेट्स. उसके अलावा ऑफ कोर्स जब इमरजेंसी लग जाएगी, ओके, इमरजेंसी के रिस्पेक्ट में जो पावर्स हैं, सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इमरजेंसी द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट आर मोर. ठीक है, यू सी आर्टिकल्स 352 देख लो, 360 देख लो, 352 से 360 देख लो. तो जब भी स्टेट में इमरजेंसी लगेगी, जब भी प्रेसिडेंट्स रूल लगेगा एक स्टेट में, सो देयर इट विल बी टोटली अ कंट्रोल ऑफ द यूनियन पार्लियामेंट एंड टोटली बी अ कंट्रोल ऑफ द president through the aid and advice of council of ministers rather. तो इन सब criticisms को देखते हुए there was this scholar looking at all these criticisms. The scholar, or I would rather say this person, Dr. K.C. Veer. Dr. K.C. Veer has said, or he has used a term कि भाई ये फेडरेशन तो नहीं, exactly फेडरल स्ट्रक्चर तो नहीं,
कहीं पे स्ट्रॉन्ग सेंटर है, तो ये फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर को हम क्या वन वर्ड प्रोवाइड करें? So Dr. Casey Ware has coined an expression calling Indian Constitution as quasi-federal, कि भाई हम लोग क्वाज़ी फेडरल हैं, हम टोटली फेडरल नहीं है। और जो प्रोफेसर आइवरी जेनिंग्स हैं, जेनिंग्स जो है, प्रोफेसर आइवरी जेनिंग्स जो है, वो बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कि आर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन जिसके थोड़े बहुत सब्सिडरी फेडरल फीचर्स हैं। सो अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन with subsidiary federal features. So this is what Jennings has said. Casey Ware says कि we are a quasi-federal federal constitution. Quasi-federal constitution का मतलब हुआ where more power or more control is provided to the center, or which we can also say it कि जैसे हम एक loose structure है, loose federal structure है। और तीसरा, अगर आप यहाँ पे और स्कॉलर्स की बात करें, तो we are also called as a unitary constitution with vertically divided sovereignty. तो एक और स्कॉलर रहे हैं, अलेक्जेंड्रो वेक्स, he calls our constitution as unitary constitution with vertically divided sovereignty. अब इसके अलावा हमें ये बात माननी पड़ेगी कि सी, as per the requirements of the countries, you can have different structures for yourself. It can be interpreted in different manner for different people. तो वैसे ही फेडरेशन है। अब the concept federation or a concept of federal government, the concept of federation can mean different things to different people, and वैसे ही इंडिया में है। ओके, अब डिफरेंट कंट्रीज में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इसको अडॉप्ट किया गया है, मॉडिफाई किया गया है, एंड दैट इज वी से उसी तरीके से इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। कहीं पे भी इसके बिल्कुल थ्योरेटिकल ग्राउंड्स, बिल्कुल रियल वर्च्यूज के ऊपर, बिल्कुल हाइपोथेटिकल वर्च्यूज के ऊपर ये कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगा। इट इज ऑलवेज a product, or federation, or the concept of federalism has always emerged as a concept of compromise and the requirements of your own people, the circumstances which you were in place, तुम्हारी क्या हिस्ट्री थी, कैसी रिक्वायरमेंट्स है, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहा था कंट्री, तो उसी तरीके से हमारा जो इंडियन फेडरलिज्म है वो भी बिल्कुल थ्योरी के हिसाब से रिजिड होगा। रादर हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रिक्टली रिजिड भी नहीं है, इट इज a blend of both, partially rigid, partially flexible. ओके, सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, लेकिन कुछ कुछ चीजें हमने हमारे हिसाब से मोल्ड कर ली, मॉडिफाई कर ली। तो हम ये कह सकते हैं कि whenever you are understanding the concept of federation or the concept of federalism, ये मतलब इसको एक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशनल कॉन्सेप्ट या एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट कहना गलत होगा। इट इज टू बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ फंक्शनैलिटी। ओके, इट इज more functional than a theory subject. It is more functional subject rather than a institutional concept. और बहुत सारे political systems में कुछ जो भी features होंगे, अगर वो inflexible है, okay, in different political systems there can be features which are inflexible or which are changed, जो कि real
पॉलिटिकल थ्योरी में नहीं प्रोवाइड करे गए एज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो वो उस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को अपने आप से नॉन फेडरल नहीं बना देगा. Rather, when it comes to India, the Supreme Court has accepted Indian Constitution or the federal structure as a basic pillar. Okay, so when you refer to the case, I would give you only 3 cases here to give you an idea. So Indian Supreme Court ने in Kesoram Industries, State of West Bengal versus Kesoram Industries, they have said कि फेडरलिज्म कैसा भी हो, वो क्वाज़ाई है, लूजली स्ट्रक्चर्ड है, वो हाइब्रिड फेडरल है, या वो फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर है, जैसा भी है, दिस फेडरलिज्म इज अ बेसिक पिलर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. और हमने एक यूनिक फेडरल स्ट्रक्चर, we have a unique federal structure that we have put for ourselves. We have a unique federal character. क्यों हम इसको unique कहते हैं? Because this is quasi federal. They've agreed to the word given by KCB. They've agreed to the terminology given by Jennings, their ideas कि ये unique इसलिए है क्योंकि ये quasi federal है. Exactly, purely in theory form federal नहीं है. It is hybrid federal. It's as per the needs of the country. ठीक है. तीसरा केस कि ये loose federal word, loose federal, the concept of loosely federal structure or a loose federal structure. Loose federal structure. This word for our federalism, Indian federalism, was used by the Supreme Court in Professor Yashpal's case. Professor Yashpal versus Chhattisgarh, state of Chhattisgarh. Professor Yashpal versus state of Chhattisgarh कि India has a loose federal structure. A loose federal structure हमने अपने लिए adopt किया है. We are not following exactly the institutional concept. हम कोई ऐसे ये नहीं है कि फेडरलिज्म बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल नहीं है. We have changed the features as per our requirement. और last case here, the third one, which explains Raja Rampal versus Honorable Speaker. Raja Rampal versus Honorable Speaker. In this case, the Supreme Court has said कि जो Indian फेडरलिज्म के बारे में उसने बोला है कि इट इज एन indestructible union of destructible और destructive units. मतलब आप स्टेट्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो, उनका नाम बदल सकते हो, एक स्टेट से 2 स्टेट बना सकते हो, बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकते हो, ओके, टेरिटरीज को एक्सटेंड कर सकते हो, बट you cannot destroy the union. They cannot leave to accept the supremacy of the union. तो इसीलिए इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हमारा जो यूनियन है it is indestructible, that you have come under an umbrella, okay, that is indestructible. लेकिन जो यूनिट्स हैं, जो स्टेट्स और ड्यूटीज हैं अपने आप में, वो डिस्ट्रॉय की जा सकती है, वो चेंज की जा सकती है, ऑल्टर की जा सकती है, टेरिटरी में, नाम में, ओके, ज्यादा क्रिएट की जा सकती है, you can reduce them, that can be done. So if I have to say or if I have to conclude, तो Indian federal structure loose कैसे है, okay, क्या factors हैं which are making India a quasi federal country or a loosely federal state? तो सबसे पहले we can take up few characteristics that give us the loose federal structure. Why? इसके पास कुछ unitary features हैं. Okay, there are unitary features. जैसे मैंने पहले बोला कि key areas हैं जैसे defense, foreign affairs, interstate commerce, currency. उसमें central government के पास exclusive authority है.
ठीक है। दूसरा यूनिटरी फीचर आप कह सकते हो कि जो भी ये तरीके हैं नेशनल पॉलिसी रिसोर्सेज, तो वो सब चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट को ज्यादा पावर देता है विद रेफरेंस टू द स्टेट गवर्नमेंट्स। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जो है वो बिल्कुल इक्वल नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है। सो वी हैव एसिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। तो जनरली जहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिन फेडरल सिस्टम्स में, वहां पे स्टेट्स को टोटल ऑटोनॉमी वैसी होती है जो सब दूसरे स्टेट्स को है। ओके, you have several special status provided to different states. Okay, कुछ ट्राइबल एरियाज को कुछ स्पेशल स्टेटस है। पहले जैसे जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था, अब उसको चेंज कर दिया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर। ओके, दैट स्पेशल स्टेटस इज नाउ बीइंग रिवोक्ड आफ्टर 2019, जो कि उसको पहले कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा था। ऑलराइट, कुछ और टेरिटरीज है in the temporary provisions of the constitution, जहां पे अभी भी ये जो सिमेट्री से पावर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। There is an idea of dual polity. ड्यूअल पॉलिटी का मतलब होता है कि भाई दो लेवल्स के ऊपर गवर्नमेंट चलेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी और स्टेट गवर्नमेंट चलेगी। बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, central government has power to intervene in state affairs, in under specific circumstances. There is dual polity, but central government can, intervene under state affairs under certain circumstances. कि भाई जब emergency की situation है, okay, the constitutional machinery in state has failed, तो president's rule लग सकता है। This is one character which tells कि हम loosely federal country क्यों है, loosely federal structure क्यों है। You have an idea of single citizenship. You're not citizens of Maharashtra or Tamil Nadu and citizens of India. Okay, traditional federal structure जो होता है उधर separate constitutions होते हैं। स्टेट के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हो सकते हैं, उनका अपना फ्लैग हो सकता है, लेकिन इंडिया में वी हैव सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन दैट अप्लाइज यूनिफॉर्मली टू एवरी स्टेट। तो उसका मतलब है कि वी आर यूनिफाइड एज अ नेशन। सो दोज यूनिटरी एलिमेंट्स आर रिफ्लेक्टेड इन आवर फेडरल स्ट्रक्चर और central control over states. ओके, अब स्पेशली जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली जो कि कॉन्करेंट लिस्ट में शेड्यूल 7 में जो कॉन्करेंट लिस्ट दी हुई है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लॉज को ओवरराइड कर सकती है। स्पेशली एग्जांपल कैन बी द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट। अगर कोई स्टेट लॉ किसी सेंट्रल लॉ के साथ कंफ्लिक्ट में आ जाता है, अब कॉन्करेंट लिस्ट क्या कहती है कि दोनों अपने लॉज बना सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे लॉज। बट अगर कोई कंफ्लिक्ट आएगा तो जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करेगा। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और द सेंट्रल लॉ हैव अबिलिटी कि वो स्टेट लॉज को ओवरराइड कर दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर सुप्रीम है कुछ कुछ एरियाज में। देन यू लुक एट द रोल ऑफ गवर्नर्स। अब अपॉइंटमेंट कैसे है गवर्नर की? इट इज थ्रू द प्रेसिडेंट ओनली। ओके, तो प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? एड एंड एडवाइस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये भी एक फैक्टर है अपने हिसाब से। अब जो गवर्नर है इन टोटलिटी, इन प्रैक्टिकलिटी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही रिप्रेजेंटेटिव है और वो ये एक सिग्निफिकेंट रोल मेंटेन कर रहा है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है कि भाई सेंटर और स्टेट्स में बैलेंस बना रहे। तो डिस्पाइट दीज कैरेक्टर्स विच प्रोवाइड कि भाई जो कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसीज है, स्टिल हमारे जो
फेडरल प्रिंसिपल्स है कि भाई स्टेट को एक सर्टेन डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी मिली रहे, उनकी इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, फेडरल स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी मेंटेन रहे, द सुप्रीम कोर्ट हैज played, I would rather say, a crucial role in interpreting and safeguarding. चाहे कम हो, but still they have been safeguarded by the Supreme Court of India, and it has ensured कि जो degree of autonomy है for states and the integrity of the federal system is maintained. तो फिर भी we will not say that it is not a federal state. जैसा भी है, loosely, quasi federal, hybrid federal, ये फिर भी एक federal structure है. It is still considered a federal state, though it has a loose federal structure. And this loose federal structure also reflects the balance between centralization and decentralization of powers. ठीक है, तो इस चीज से आपको क्या प्रोवाइड हो रहा है, जो भी आपका जिस भी तरह का फेडरल स्ट्रक्चर है, इट इज गिविंग यू इनफ फ्लेक्सिबिलिटी to accommodate the diverse needs and the complex requirements of plural nation जैसे कि इंडिया है. So we will be finishing up here. So we've tried to understand the concept of Indian federalism from the aspects of distribution of power between central and state governments, what is the relationship between them, and how does it impact our life. Okay, so majorly we've tried to understand this principle of power sharing. Okay, how it is shared, the way it has been criticized, and what are the reasons for which it has been criticized by various scholars. Why do we call it a loose federal structure? And in initial space, we also discussed ki jo exact theoretical institutional concept of federal structure, the elements of federation or the elements of a federal structure in theory, and then we've seen how much we have tried to apply it to India, and what is the history. Why did we opt for a loose federal structure? Why did we opt for a quasi federal structure and not a strict one like USA? So this also you have to remember, that the idea of quasi-federal structure we've adopted, or we are influenced from the structure of Canada, the Constitution of Canada. We have borrowed the idea of a quasi-federal constitution. So we'll finish here, and I hope you are enjoying the course, and it is helping you in preparation of your exams. And probably from the next week onwards, we will be taking up new topic, and we will be moving forward with part 3 and 4 of the Indian Constitution. So more interesting lectures coming up through LegalStix. I hope you're liking specifically designed courses which will help you in acing your exams, your law school exams it might be, or to just give you a basic understanding or clearing, or your concepts, which will also help you in prepare in future for your competitive exams. So thank you very much, and keep learning, keep enjoying, and stay in touch with LegalStix, and keep looking for our various kinds of courses that we provide to minds from the law schools or the legal professionals. And these all courses are designed in a manner that you do not require any kind of specific background. So we help you to give you explanations, or we aim to provide the class in such a manner that we start everything at scratch. So thank you, and let's see you in the next class now.